इसलिए वीनस जो है एक वीक प्लैनेट है, और एक वीक प्लैनेट कभी भी भुक्ति नहीं बनता। इसलिए कस्पल थ्योरी के अकॉर्डिंग वीनस को हम भुक्ति नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट मेक वीनस एज द भुक्ति लॉर्ड बिकॉज ऑफ strong negations by the appearance of 4 and 8 at the sub level and at the sub level। अगर सब लेवल पे भी यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 अपीयर हो जाता है इनके साथ, और 9 के साथ 511 भी अपीयर हो जाते, तो फिर हम ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है। मे बी इट मे गिव, but it will certainly not act as a bhukti lord. Why? Because there is strong negation at the sub level. Take the case of Saturn. 5-7-11 involvement, 5-7-9-11 commitment, 5-7-9-11 involvement, 5-7-9-11 commitment, 5-7-9-11 final confirmation without 4 and 8। इन्वॉल्वमेंट को छोड़ के सब लेवल पे और सब लेवल पे 4-8 प्रेजेंट नहीं है। व्हाट डज इट मीन? सैटर्न इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द सेकंड मैरिज। सारे प्लैनेट्स में अगर हम देखें तो सैटर्न सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है सेकंड मैरिज का। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द सेकंड मैरिज। देन लुक एट राहु, अगेन Saturn at the sub level. Look at Ketu again, Saturn at the sub level. Final confirmation में 8-12, final confirmation में 4-8-12। So if you look into the whole chart, क्या कंक्लूड करोगे? सिर्फ दो प्लैनेट्स हैं हमारे पास, एक सन और दूसरा सैटर्न। One is sun and the second one is Saturn are the only two strong planets which probably can act as Bhukti Lord, Prana Lord and Sukshma Lord। अंतरा लॉर्ड कोई भी बन सकता है, दशा लॉर्ड कोई भी बन सकता है। So they can be the Bhukti Lords, or they can be the Sukshma Lord, or they can be the Prana Lords। Now, is this clear up to this point? Only yes and no। Is this clear up to this point or should I repeat it? तो इसमें when I calculate it, then Venus is the Bhukti Lord। और मैंने आपको बताया कि वीनस बहुत वीक है। अब वीनस वीक है तो वीनस भुक्ति नहीं बनेगी। क्यों भुक्ति नहीं बनेगी? बिकॉज इट इज स्ट्रांगली गिविंग नेगेशंस by the presence of 4-8, 4-8 and 12। So thereby when Venus is not the Bhukti, the next Bhukti is Sun। Now if we go by what is given in the Harari book by Khullarji, he says that any particular planet which is a ruling planet and a strong ruling planet has to appear as the Bhukti Lord if it is also giving strong signification for the merit giving houses, strong significations for the marriage giving houses और strong significations for the event। तो यहाँ हमने देखा कि सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा प्लेनेट हमने देखा सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जो पहले अपीयर होगा वही प्लेनेट जो है भुक्ति लॉर्ड बनेगा। देयर बाय सन इज सिलेक्टेड एज द भुक्ति लॉर्ड। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू लुक एट, see, I have taken only the co-rulers of the ascendant। I am not taking the co-rulers of moon, unlike what you do in KP। अब मून के co-rulers क्यों नहीं लिए? भाई जो मून का स्टार लॉर्ड है वो दशा लॉर्ड बनेगा, मून का सब लॉर्ड है वो भुक्ति लॉर्ड बनेगा, मून का सब लॉर्ड जो है वो अंतरा लॉर्ड बनेगा, सूक्ष्म लॉर्ड जो है वो सूक्ष्म लॉर्ड बनेगा, और प्राणा लॉर्ड जो है वो प्राणा लॉर्ड बनेगा। अब if you look here, it is Saturn, Venus, Saturn, Venus, Venus, and here also you have Saturn, Venus, Saturn, Venus, Venus। तो यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है? इस सब लॉर्ड को असेंडेंट के सब लॉर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है। इट मींस सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हम टाइम बढ़ा के वीनस को सन बना दें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ के वीनस को हमें सन से सब्स्टिट्यूट करना है। Why I am taking sun? Because Sun is the sublord of the ascendant co-rulers and Venus is the sublord of the moon co-rulers।
and I need to change the Bhukti Lord, which is Venus, which is moon co-ruler, by the sublord of the sun. Therefore, Venus Bhukti will not give the event. I will have to change Venus from Venus to sun. And if I look at what time Venus changes to sun, it will be Venus will change to sun on 8/1/2023. So what I do is I put here the date 8/1/2023. I keep the time the same one, and then I calculate. I get sun as the Bhukti. Now, if sun is the Bhukti, then the next question is I have to select the Antara. अब अंतरा क्या बन सकता है? अंतरा लॉर्ड will either be sun or it can be any other planet which is a strong significator. Now, why I am selecting sun as the antara? Because sun is, number one, it has appeared twice, not twice, it has appeared many times. It has appeared as a sublord of sun. It has also appeared as sub-sublord. Moon का भी appear हुआ है ये. So sun has appeared 1, 2, 3, 4 times. So thereby sun, since it is giving significations of 5, 7, 9 and 11, thereby sun can be selected as the Antara Lord. If sun is to be selected as the Antara Lord, then this Antara Lord will be up to 25/1/2023. It means the marriage of this female will be settled in a time between 8/1/2023 to 25/1/2023. Okay. अब सन का अंतरा बुक में क्या लिखा है? The same planet is repeated if it is a strong significator through involvement and through the star lord and the sublord. It is giving 5, 7, 9, 11 very strongly, which are the houses required for the event of the second marriage. It can be repeated. So another way for another reason for repeating sun is that sun has appeared a number of times as a ruling planet. Thereby sun is preferred. Hence Bhukti of sun, Antara of sun. Now the next question is सूक्ष्म. अब सूक्ष्म कौन सा सिलेक्ट करें? तो सूक्ष्म सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास रूल्स कौन से हैं? अंतरा सूक्ष्म प्राणा हम सन और मून के ट्रांजिट से अरेंज करते हैं, राइट? अब इस चार्ट में ब्यूटी क्या है? इस चार्ट में ब्यूटी ये है कि हमारे पास प्लैनेट ही दो हैं जो इवेंट दे सकते हैं, एक सन और दूसरा सैटर्न. बाकी कोई भी प्लैनेट जो है, what did I say? Sun and Saturn can act as Bhukti Lord, Sukshma Lord and Prana Lord. Antara Lord can be any other planet other than Sun and Saturn. But here luckily Sun is there. Thereby the Sukshma Lord, Sun cannot be triplicated. तीसरी बारी इसको रिपीट नहीं कर सकते. तीसरी बारी सन को तब रिपीट करते अगर सन 9th कस्प में पॉजिटिव होता PS के साथ. It is not there, so we will not repeat it. अब the next planet which is strong significator is Saturn, so I will directly proceed to Saturn. कहीं और मुझे देखने की रुकने की जरूरत ही नहीं है. See, that is the beauty of this chart, and that is only when you analyze it, you know, looking into very minutely, जिसको कहते हैं ना माइक्रोस्कोपिक रीडिंग, कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है. Only then you can come to these conclusions. Otherwise, what you find is you will get confused ki which to select. Should I select Sun? Should I select Moon, Mars, Rahu, Jupiter? Because all are significators. They all are significators of the second marriage. But due to negations, they will not give the event. They will not allow the event to fructify. So Saturn will be the other. And if Saturn is the other, now the date has been reduced from 8/1/2023 up to 19/1/2000 and up to 16/1/2023. So I will substitute here 16/1/2023. Calculate. When I do it, I get Saturn as the Sukshma Lord. Now if Saturn as the Sukshma Lord, look at the transit of Sun. It is okay. It is in the
10th sign, lord of which is Saturn. So this is okay. Now, if I look at the prana lord which I am to get, then sun should have been the prana lord. Okay. But since the gentleman who has interpreted, he has given 18 as the date. In my opinion, it has to be 17/1/2023, because out of Sun and Saturn, no other planet can be present as the Dasha period Lord. अब इसकी 17 को मैरिज होनी चाहिए, चलो एक आधा दिन आगे पीछे भी हो जाता है. He says that the marriage has happened on 18, and if it is on 18, it has to be either Rahu Prana or it has to be Jupiter Prana Lord. अगर राहु को देखेंगे तो राहु is a better Prana Lord because Rahu is the sub lord of the 9th cusp. So since he has pointed out that the marriage has happened on 18, so Rahu could have been taken as the Prana Lord. But in my opinion, 17th was the exact date when the marriage would have fructified. ऐसा हो सकता है कि 17 तारीख को एंगेजमेंट हो गई हो, 18 तारीख को जो है वो मैरिज हो गई. Right. Now this is how you know we interpret this chart and we calculate that what is the exact date for the marriage of this native. Right. So अब इसमें देखो, इसी पॉइंट को अगर हम पीछे ले जाएं, अगेन टू द सेम पॉइंट, 27/1/2023, it is 22. Okay. Now here what you find is transit. अब ट्रांजिट में इंपॉर्टेंट क्या है? हॉरेरी चार्ट में ट्रांजिट में Sun is a slow moving planet, will stay in a particular sign for almost 2.5 years. But here in this present case, Sun is having about 21 degrees. Is 21 degrees. So 21 degrees का मतलब हो गया almost 20 months have passed. 21 months have passed. So it will stay in the same sign for 9 months. As long as Saturn stays in this sign for 9 months, the event of marriage will not happen. Because Saturn is here in a sign which is 12th to the primary sign. 9th house is the primary cusp, and Saturn is sitting posited in a sign which is 12th to its own sign. So Saturn will have to be shifted to this sign. तो 9 महीने तो यहाँ से क्लियर हो गया on the basis of degree that this marriage will not happen. So it means if to this I add 9 months, it becomes 27/10. Now before changing this time period, the next important point is that Jupiter is here present in the 11th, in the 9th house, the primary cusp. Is the presence of Jupiter in the Aquarius sign okay, will give the event, or does the presence of Jupiter in the Pisces sign will give the event? This is important. We have to check it. अब जुपिटर का ट्रांजिट जब हम डिसाइड करेंगे, आप सपोज करो जुपिटर अगर एक्वेरियस साइन में होगा, तो एक्वेरियस साइन में यू हैव 3 स्टार लॉर्ड्स, and the 3 star lords in the Aquarius signs, they are Mars, Rahu and Jupiter. हमने अभी जब प्लैनेट्स का सिग्निफिकेशन डिस्कस किया था तो क्या डिस्कस किया था? सन इज इंपॉर्टेंट, सैटर्न इज इंपॉर्टेंट. सैटर्न कहाँ मिलेगा? सैटर्न का स्टार 4-8-12 के अंदर, और सन का स्टार कहाँ मिलेगा हमें? 159 में और 2610 में. एम आई राइट? अब इसका मतलब जुपिटर का ट्रांजिट जो एक्वेरियस साइन में है, ऑल्दो इट इज पोस्टेड इन द 9th हाउस, it will be better when Jupiter shifts to the Pisces sign. Why to the Pisces sign? क्योंकि Pisces sign में you have 3 stars. First one is Jupiter itself, second one is Saturn, and Saturn is one of the better planets, a better star.
which will allow the event to fructify. So the transit of Jupiter is better in Pisces than in Aquarius. अब इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जुपिटर का ट्रांजिट जो है पाइसेस में बेटर है एज कंपेयर टू एक्वेरियस, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि सैटर्न इज प्रेजेंट इन ए साइन 12th टू इट्स ओन साइन, 12th टू द 9th cusp, to the primary cusp. Therefore, Saturn will have till it goes to the 9th cusp, the event will not fructify. Saturn is of 20 degrees 48 minutes, which means almost 21 months. They have passed, 9 months are remaining. So this event will not fructify before 9 months period of time. Another way to predict कि ये 6 महीने में, then what happens? Saturn still is in the same sign. It has not moved to the next sign. So Saturn here is 24 degrees. Retrograde हुआ होगा बीच में. Maybe Saturn has changed, become retrograde over here. It would have gone to this sign, then being retrograde it has shifted back. So I will keep on now changing it 1 month each. Jupiter has already gone to Pisces sign, which is the favorable sign for the event to happen. Why do I say that presence of Jupiter in the Pisces sign is favorable for the event? Look here. हमने क्या डिस्कस किया था पहले कि मैरिज के इवेंट के लिए जुपिटर शुड aspect natal Venus. For a female, it should aspect natal Mars. Right? Now look here. Jupiter in 12th sign, Venus is retrograde. It means Venus is also acting from which house? 6th house also. And from Pisces sign, it is having the 9th aspect on the Venus. It means the appearance of Jupiter in Pisces sign is good because it is in relation to Venus, which because being retrograde is also acting from the 6th house, and Jupiter is making a 9th aspect on the 6th house. पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, जुपिटर का ट्रांजिट पाइसेस में बेटर क्यों है? मार्स देखो, नेटल मार्स इज हैविंग 4th aspect on Jupiter, and natal Mars from the 7th house is having 4th aspect on Jupiter, so it satisfies both the condition. It is linked to the natal Mars and it is also linked to the natal Venus. Thereby the presence of Jupiter in Pisces sign is a better sign for the event to happen. अब सैटर्न की बात कर रहे थे हम, तो सैटर्न जब तक एक्वेरियस में शिफ्ट नहीं करेगा इवेंट नहीं होगा। 24 डिग्रीज 26 मिनट्स का है, फॉरवर्ड करेंगे 1 मंथ तो 25 डिग्रीज, 1 मंथ 27 डिग्रीज, एंड नाउ ऑन 1 मंथ 27 डिग्रीज, तो ये बन गया 1 डिग्री 9 मिनट्स का। सो इसको हम 1 वीक पीछे करेंगे, enhance it by 1 week, it becomes 21 minutes 27 on 20th. Okay, so it is again 1 day. 1 day each. Look here now, on 17/1/2023 Saturn has gone to the Aquarius sign, Jupiter has occupied a position, Sun has also occupied a position, which is okay, and then Moon, you know, is also having a 9th aspect from Jupiter. It is okay, all conditions are satisfied, and the event of marriage will trigger on this particular date. That is 17/1/2023. It is what I predict. अब it प्लानिटरी पोजीशंस में भी देखोगे तो वो भी 5 को इंडिकेट कर रहा है, 9 कर रहा है, बट फॉर लव मैरिज हियर नो, Venus is retrograde, it is also acting from the 6th house, it will not allow the love marriage to happen. Number 2, सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लव मैरिज के लिए जो 5th हाउस का सब लॉर्ड है, दैट शुड बी कनेक्टेड टू द 9th हाउस in the natal chart. 5th house sub lord is Mars. It should be connected to the 9th house either by itself or through its star.
right? And Hmm. similarly, the ninth subsublord should also be connected to the fifth house. अब इसमें ये बहुत वीक कॉम्बिनेशन है, बहुत वीक कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इस चार्ट में जो इंडिकेशन मिलता है कि ये जो दो लोगों की मैरिज हुई है, इस लेडी की जिससे मैरिज हुई है वो उसको पहले से जानती थी, लेकिन लव मैरिज नहीं हुआ है, अरेंज्ड मैरिज हुआ है। आई इंक्वायर्ड दिस टुडे इटसेल्फ फ्रॉम उत्कर्ष कि काइंडली टेल मी कि दिस इज व्हाट आई फील। तो ही सेड कि सर ठीक कह रहे हो आप कि वो लेडी और लड़का दोनों एक दूसरे को जानते थे, पर उनमें कोई ऐसा लव वाली कोई चक्कर नहीं था। सो this also establishes